Good evening everybody, this is Sanwal and Kharl and welcome to LRN Debates. LRN Debates एक हमारा वीकली प्रोग्राम है जो LRN के प्लेटफॉर्म्स ने शुरू किया है, जिसमें हम वीकली बेसिस पे एक डिबेट का आगाज़ कर रहे हैं और उस डिबेट के अंदर हम वर्ल्ड सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, दुनिया के डिफरेंट निज़ामों को और उसके साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसके जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। मीनवाइल हम उसमें उस पूरे वीक में होने वाली जो भी डेवलपमेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है हम उसको डिस्कस करेंगे और उसमें हम ओवरऑल एक ब्रेक थ्रू देंगे सीएसएस के स्टूडेंट के लिए और पीएमएस के स्टूडेंट के लिए कि वो किस तरीके से उस पूरे वीक के डेवलपमेंट को कवर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। So I will move towards Mr. Azhar Imran. He will describe himself and then we'll continue this. Thank you very much, Mr. Sanwal, to have me on the show. And certainly I extend my gratitude towards LRN for starting this very adventurous and very inspiring program that will not only target the audience and the young who are looking for CSS preparation and understanding what's happening around the world, but also it will engage the debates and ideas taking place around the world. And we will be looking at the social, political, economic and geostrategic changes taking place all around the world with respect to what we call the rise of the Eastern century, the rise of Asia, and how it is going to challenge the dominance of the West that has been in the world power since the Industrial Revolution, which we are actually going to discuss today. Sir, we will just discuss the world system before we start from the world system, and then we'll continue towards the political system of the world and the world institution that actually run the world system. We also discuss various government system in the world, and then we continue with the evolution system, like how this system evolved itself and how it come towards the 21st century which we are living now. I will continue this debate with you. What do you know about the world system? How we can describe world system? Well, to just give a simple idea about how do we understand the world we are part of and how do we understand the world in which we live, it has been the outcome of two major movements. Certainly, the viewers are aware of the idea of what we call the Enlightenment age or age of Enlightenment. That started in Europe in 15th and 16th century, which actually was initially a resistance to the ideas of Catholic Church, traditionally controlling the state structure. But also this went into more transformation by the end of the 18th century. It began with the Industrial Revolution that happened in Britain, mainly in Britain, but all over Europe. With the creation of the steam engine, it was actually the ticking point, the starting point that actually revolutionized the transformation. So, and it actually created the world that we are part of that. And if you need to understand that world, the term I use or I coin is the idea of the world system or the evolution of the world system. So world system is basically, if you look at any society, any state, so there are three elements or three kinds of structures that a state or society requires to run and govern itself collectively. The first one is, of course, political system. So political system is actually how people, millions and hundreds and thousands actually come together to create some structures through which they actually run their collective affairs. And that idea came first in the age of Enlightenment, and after Industrial Revolution, it became very popular in the form of democracy. Yeah. So we're going to talk about the evolution of democracy as well in the political system. But when you talk about the world system, it has mainly three components: the political system, and certainly the democracy as a political system. Then, of course, the evolution. Any political system cannot function without a viable, functioning economic system. So we will be also talking about a system comprised of political system and economic system. And the third, both politics and economics have a deep and inseparable interplay. But this interplay cannot function without a very structural, systematic legal structure. Yes. So when we talk about the world system, we talk about the evolution and beginning of global political system, and we know we live in the age of democracy. So evolution of democracy is a global political system. The second, the evolution of the global economic system, of course, overwhelmingly and dominantly capitalism that we'll be talking about. And third, of course, that how this interplay of global political and economic system in the form of democracy and free market economy led to the, supported by the Industrial Revolution in Europe, led to the evolution of
contemporary international economic, contemporary international legal and governance model. Initially, this legal and governance model had, beginning in Europe, what we call the Concert of Europe or Congress of Vienna, that was actually a multilateral security or collective security agreement between the European power, particularly after the French Revolution and rise of the Napoleon Bonaparte. So it was against the Napoleonic Wars, and this agreement came at the end of the Battle of Waterloo that defeated Napoleon Bonaparte and French expansionism. So, and eventually this global, international legal political order of collective security worked for almost 100 years, but it ended at the end of the World War I, when the European powers, mainly France, Britain on one hand, and Germany on the other hand, after the death of Bismarck, when the German unification was ripping apart. So it led to the World War I. But before we go on to that part, I think let's move back. What happened in the Industrial Revolution, and what were the major transformations that the Industrial Revolution introduced, and how did people like us, or societies like ours, who are not part of the European societies, like we are part of Asian Africa, the idea of the East. So how did this European system, this transformation that began in the Europe in the form of Industrial Revolution, actually impacted us, and how did we get introduced to that idea? So if we look at the Industrial Revolution and its transformation, it had huge transformation in Europe. Initially, the idea of democracy, the Catholic Church and monarchical system was challenged. It ended in the economic context, the feudal society, the agricultural economic model in the Europe. Yes. It began the Industrial Revolution and industrialization. And of course, third, it created a modern legal structure that had to complement the political system, the democracy and economic system. So if we look at the impacts of the Industrial Revolution, so we can broadly categorize these impacts into 4 to 5 categories. So if we look at that, the first major change that the Industrial Revolution brought in was the beginning of the idea of the modern democracy as a global political system, or at least in Europe particularly, the Catholic Church was challenged, but at the same time, the monarchical structure was challenged. So if someone says that there's a monarchy in Great Britain right now as well, that monarchy is very ceremonial. It doesn't have a political or legal power. It is just how the British culture has been. Sir, here we are discussing actually the beginning of French Revolution, right? Like the transformation from monarchy towards the people power, right? Yeah. So Industrial Revolution was actually that cornerstone that triggered up these changes. So if we look at those changes, it was democracy as a political system, the industrial economy, and eventually the capitalism as an economic system, the modern legal structure as a legal system to complement politics. But two changes which are actually even not part of the major discourse in Europe for many centuries, even at Oxford and Cambridge, you won't come across these debates unless their resistance came from those who were the most victim of the Industrial Revolution, the societies of Africa and Asia for that matter. And the fourth impact of the Industrial Revolution was colonization. And how did colonization affected the local societies of Asia and Africa? And of course, the fifth one was the transformation from rural societies to the modern urban societies, the beginning of the urbanization. So if you look around the world, for example, back in the 18th century, by end of 18th, the Paris, the London, the today's great metropolitan cities were not the cities at all. They were like rural areas. And that, massive immigration and migration, the people moved from rural areas where the industry was being set up in search of jobs. So this was the fifth transformation, the beginning of massive migration, immigration, creating the modern urban societies. And that led to further two structures. One, the idea of the modern education. So if you look at the history and you trace out the roots of the modern education in terms of mass education, they are the product of the Industrial Revolution. And the seven major impact was the beginning of the modern, professional, permanent idea of civil bureaucracy. Yes. And even our interaction with that bureaucracy has been because of our colonial experience. Yes. So these were the seven major changes that happened and that were triggered by the Industrial Revolution. And that led to the development of the what we call the world system, or evolution of world system. But here is one point very important, that if it was in the Europe, why did it came to India, for that matter, Africa or Asia, or broadly the Eastern societies? How did it has a link with the colonization? That's a very important debate to have, not only for our students who want to go for understanding of international affairs and international of CSS, but also generally that how in many ways this question can also be addressed
our experience with democracy, why we have so fractured experience with democracy, because its roots are in a very violent and brutal experience. Because the democracy that was introduced by British in India, it did not come with the free consent of the people. It was imposed, and that democracy was never, the democracy that we at least cherish as an idea. Yes. So in the beginning, if we look at that, the first major political change that happened in Europe, it was in the France, and you're aware of very much what we call the French Revolution in 1789. So French Revolution abolished the monarchical structure, and although it was not a good experience, because later on, after I think less than a decade, it was taken up by the Napoleonic dictatorship. Yeah. But still, in many ways, it actually triggered up the multiple political movements in Europe. But I think more than the political, the major impact was of Industrial Revolution, the mass production under industrialization of the global economics. So now the Europeans were producing more than they required to feed their own people. Yes. And for this purpose, they needed two things. One, they needed new markets where they can actually, sell their surplus production Yes. to earn profit. But at the same time, when the Europe went through gradually into industrialization, so they now were converting agriculture, the raw material production, into industrial. And they needed more raw material and more production. And in that context, there came the idea of colonization. So the beginning of colonization was aimed at occupying Africa and Asia, and India particularly for that matter, because we have a more close and first-hand experience of India. So the objective was to occupy such a mass agriculture societies, and of course through cheap labor export the raw material to Europe, convert them into finished goods, and then of course sell them back to these colonized markets to earn profits. Yes. And that's what Shashi Tharoor talks about in his book, An Era of Darkness, the British Empire over India, in which an inglorious empire, in which he talked about, looks at the economic and multiple other structures, that how did British colonization actually made Indian society not only economically but culturally, politically, socially, polarized. And one of the reasons that the Muslims and the Hindus had that conflict was the outcome of the British colonization. So the massive experience of the Industrial Revolution came in the form of a violence to the African and the Asians, and particularly in India, if we talk of our experience, it was through that when the Mughal Empire was ended after the 1857 war. And then we went into what I call the colonized modernity. Colonized modernity means that the modern ideas of democracy, of civil services, of professional military, of industrial economies, of people rights and constitutionalism, they came from, of course, Europe in that way. But it came in the form of violence and exploitation, and what I call the imposed modernity. What was the main basic difference between these two societies? Like we were discussing the African or Asian societies, and then we were discussing the European societies, how they came here and how they explore this land. Like the basic difference is technology, or education or culture. I think this is one of the arguments that we come across in the most of the European historians who have talked about the European experience of colonies in Asia and Africa. But more than that, if we look at that, it was not that the Indians somehow were backward, or for that matter, even the Africans or Asians were backward, that we did not have that industrial experience. The problem was that India was one of the richest economy at that time. Yeah, as Kishore said, it's 24% of the global GDP, exactly. So it means by any definition, if we look at that structure of economy, which was agriculture, Indians were not backward. It means they would have their own transition towards industrial revolution. But the idea of imposing industrial revolution on India was not for the benefit of India. It was actually to impose for the benefit of the Europeans, to create more and more markets of their surplus production. So if we make an analysis of that, in that way the world system evolved in the post-industrial revolution context. And in that context, it actually introduced these 6 to 7 major changes. Okay. And these 7 major changes are broadly categorized into 2 contexts: the colonization of Africa and Asia and their experience with modern idea of democracy, constitutionalism, and legal structure and economic structure. But on the other hand, it of course empowered Europe as an economic power, military power, technological power, and that facilitated Europe to expand further, to colonize further. So if you look at that context, the idea of modern legal structure, the idea of rule of law and due process law and constitutionalism are the outcome of that industrial revolution and the age of enlightenment. But very interestingly,
On the one hand, this very idea was actually promoted with the objective, what we call white man burden thesis, your white man civilizational theory, that white man is the most intelligent man in the world, so it has a civilizational burden to transfer the uncivilized, like blacks and Indians, the browns. But what they could not realize, that this lust of their colonization under the umbrella of civilizational mission was creating rift within the Europe. And if we analyze the beginning of the World War I, the rise of the Hitler for that matter, before that the World War I, France and Britain on the one side, yes, and Germany on the other side, it was primarily the confrontation and conflict because the German did not have colonies. Yes. So they did not have markets to sell their surplus production. Yes. So losing their economy and profit. On the other hand, the British were occupying the French in Africa, and this led to the conflict, and this led to the World War I. So in that context, this was the first end of the evolution of the world system. Okay. When the World War I began, the rise of fascism after that in Italy and in Germany in the form of Hitler. So this was the beginning of the end of the first part of the world system. Okay. That started with the French Revolution and it ended with the World War II. So these 7-8 structures were introduced. It transformed the Europe, it transformed the Asian Africa. Of course, in a negative context, in an exploitative context. But within the Europe, this evolution of the world system created polarization and conflict that led Germany, France and Britain into the World War I. And World War I was actually the beginning of the end of the first part of the evolution of world system. Now coming to the second part of the evolution of the world system, that is the idea of economics and free market economy and capitalism. तो जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम या दूसरा जो पार्ट आपको नजर आता है एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम में, वो बेसिकली इकोनॉमी का है और कैपिटलिज्म का है कि किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की और अपने इंटरेस्ट के लिए कॉलोनीज को क्रिएट किया। तीसरा जो है वो हमें ऑफ कोर्स एक बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन ग्लोबल गवर्नेंस और लीगल मॉडल नजर आता है, जिसकी वर्ल्ड वॉर के बाद जिसको गवर्न करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये तीनों स्ट्रक्चर्स बड़ी हद तक फ्रांस, ब्रिटेन और टू सम एक्सटेंट जर्मनी ने कंट्रोल किए बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II जब हुआ तो एक बात मैं यहाँ पे कर दूं स्टूडेंट्स के लिए कि जिसको हम कहते हैं ना वर्ल्ड सिस्टम। अच्छा, अब जो वर्ल्ड सिस्टम है, जिस वर्ल्ड सिस्टम में हम रहते हैं, ये यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड सिस्टम है और इसके 2 पार्ट्स हैं। जो 1780 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो वर्ल्ड सिस्टम स्टार्ट हुआ वो वर्ल्ड वॉर II तक एंड हुआ। वो वर्ल्ड सिस्टम यूरोपियन लेड वर्ल्ड सिस्टम था। वर्ल्ड वॉर II के बाद जो सेकंड फेज स्टार्ट होता है वर्ल्ड सिस्टम का, जिसको हम लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं अंडर द अम्ब्रेला एंड लीडरशिप ऑफ अमेरिका, वो सेकंड पार्ट। इसलिए जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है वो अमेरिकन यूरोपियन है या वेस्टर्न है, उसको आप एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। अच्छा, अब जो वर्ल्ड सिस्टम है अगर हम उसको एनालाइज करें तो एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम को हम 3 स्ट्रक्चर से एनालाइज करते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स और लीगल स्ट्रक्चर से। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिटिकल सिस्टम या वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। ऑफ कोर्स इसकी ओरिजिन तो यूरोप से है और वेस्ट से है। जब हम पॉलिटिकल वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। Democracy is a global political system, okay, to govern the modern societies, to uplift the human development, to achieve the human development, to create the development of the every individual in the state. The only system that can actually lead to flourishment of societies is democracy. The second thing is that the democracies have to be based on constitutionalism. And constitutionalism means 3 things. A written agreement of rights and responsibilities between state and society. कि जो बुनियादी तौर पे constitutionalism का आइडिया है वो ये है कि स्टेट और सोसाइटी के दरमियान written agreement होगा, एक social contract है, exactly वो एज ऑफ एनलाइटमेंट है उसके बाद social contract। तो जो इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का डेमोक्रेसी के बाद वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, के स्टेट और सिटीजन की जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जो स्टेट की पावर है और जो सिटीजन के राइट्स हैं वो दोनों रिटन फॉर्म में होंगे, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं और उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में फर्दर 3 चीजें होंगी। पहली, कॉन्स्टिट्यूशन विल गारंटी फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स across the board, irrespective of their gender, religion, caste, race or whatever. दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था वो बेस करता था
फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर या फ्री स्पीच के आइडिया के ऊपर. एंड दैट्स व्हाई वी सी यूरोप फील टू ऑफेंडेड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट फ्री स्पीच इज नॉट टू hurt the sentiments of a Muslim by creating some such kind of inhuman acts. तो दूसरा आइडिया जो था वो फ्री स्पीच का था, फ्रीडम ऑफ मीडिया का था. तीसरा आइडिया जो हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो जो तीसरा आइडिया जो है वो आइडिया है फ्रीडम ऑफ डिसेंट का, डिसएग्रीमेंट का, क्रिटिसिज्म का, बोलने की आज़ादी. तो दैट इज हाउ दे डिफाइन पॉलिटिकल सिस्टम. And Europe says they're looking at our experience. If the world has to develop and grow economically, culturally, politically, intellectually, they have to follow democracy as a political system. अच्छा, अब जो दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम है उसको इकोनॉमिकली दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. इकोनॉमिकली जब हम बात करते हैं वर्ल्ड सिस्टम की, तो इकोनॉमिकली दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. एक को हम कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ और दूसरे को हम कहते हैं ग्लोबल साउथ. अच्छा, अब ग्लोबल नॉर्थ में 3 कॉन्टिनेंट्स आते हैं या 3 रीजन्स आते हैं. नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, देन मेनली द वेस्टर्न यूरोप. ठीक है, वेस्टर्न यूरोप. और थर्ड इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड को काउंट किया जाता है. अच्छा, अब ये जो ग्लोबल नॉर्थ है ये बुनियादी तौर पे इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इनको कहा जाता है डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. तो डेवलप्ड इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 चीजें. एक तो दे कंट्रोल द प्रोडक्शन and they control the production of the global financial capital. ठीक है, जैसे डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं. दूसरा, दे हैव इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर बेस ऑफ इकोनॉमी. तो उनकी जो इकोनॉमी की बेस है वो इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चर्ड है, फिनिश गुड्स हैं, इनके वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स. और तीसरा जो है वेल ट्रेन्ड एंड वेरी कैपेबल, साइंटिफिकली एजुकेटेड, स्किल्ड लेबर, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्स. एंड द अदर इज ग्लोबल साउथ. अब ग्लोबल साउथ के अंदर जनरली एग्रीकल्चर इकोनॉमीज आती हैं या अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज आती हैं, नॉन इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आती हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका है, उसके बाद अफ्रीका है और उसके बाद एशिया है. सो दिस इज द इकोनॉमिक डिवीजन. तो एक तो दुनिया को पॉलिटिकल डिवीजन है. जब हम वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो दुनिया को वर्ल्ड सिस्टम के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स या 3 प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स को प्रोसेस किया जाता है. द ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें जो डेवलप वर्ल्ड है वर्सेस अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड, नॉर्थ और साउथ. ये तो इकोनॉमिक डिवीजन है. जब हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल डिवीजन के अंदर बुनियादी तौर पे जो मैंने पहले भी बात की कि दुनिया को 2 तरीकों से स्टडी किया जाता है. पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है दो स्टेट्स which have established and functional democracies and established and functional principles of liberal constitutionalism and freedom of speech and human rights and right to dissent and disagreement. और इसी के अंदर एक जो बड़ा important perspective है वो है कि ये पॉलिटिकल डिवीजन जो है, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं मेनली वेस्टर्न, वो इसको लिंक करते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इनसेपरेबल है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज इनसेपरेबल फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि अगर हम फंक्शनल और इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज की बात करें, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ, तो ये उन्हीं सोसाइटीज़ में है जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं, तो जो इकोनॉमिकली भी डेवलप है. तो ये 2 मैकेनिज्म्स हैं दुनिया को वर्ल्ड सिस्टम को एनालाइज करने के, जिसके अंदर फिर 3 चीज़ें हम जब हम वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो उसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं. ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें डेवलप और अंडर डेवलप या डेवलपिंग वर्ल्ड है, और उनके प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसीज, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स और इंसानी आज़ादियाँ या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिसेंट. दूसरा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है वर्ल्ड सिस्टम के अंदर, जिसमें ग्लोबल नॉर्थ और साउथ है. तीसरा जो है, जो थर्ड है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फॉर मी एज अ टीचर एंड एज एन एनालिस्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. इस पूरे आइडिया को एनालाइज किया जाए और वो है द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज. सिर्फ जो डेवलप वर्ल्ड है वो अपने आप को इस वजह से डेवलप नहीं कहती कि वो डेमोक्रेसीज हैं और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियल हैं या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं. दे आल्सो चेरिश दैट राइटली और रॉन्गली वी कैन एग्री टू डिसएग्री एंड डिसएग्री टू एग्री कि जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी का हो, फेमिनिज्म का हो, ह्यूमन राइट्स का हो, वो ये चेरिश करते हैं और सर्टनली वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं. और मैं ये बात करूंगा यहाँ पे कि कुछ हद तक उनका इसमें सिविलाइजेशनल नार्सिज्म भी है. ऐसी बात नहीं है कि ईस्टर्न सोसाइटीज़ में या अफ्रीका एशिया में जो है इस तरह के आइडियाज़ नहीं थे. इफ़ वी गो इनटू द हिस्ट्री देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्कॉलरशिप.
लेकिन वेस्टर्न जो हैं वो अपने आप को इस लिहाज से चैरिश करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्न वर्ल्ड के आइडियाज़ हैं, जिन आइडियाज़ की बुनियाद पे दुनिया में तब्दीलियाँ आई हैं, वो आइडियाज़ चाहे डेमोक्रेसी का हो, वो फेमिनिज्म का हो, वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का हो, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो, वो सारे आइडियाज़ भी उन्हीं सोसाइटी से आ रहे हैं जो अपने आप को पोलिटिकली डेवलप सोसाइटीज कहते हैं, जहाँ पे इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज हैं, जो इकोनॉमिकली डेवलप कहते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो तीसरा जो वर्ल्ड सिस्टम का एनालिसिस बनता है या एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और उसकी एवोल्यूशन, इकोनॉमिक सिस्टम और उसकी एवोल्यूशन, और प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज, कि जो जदीद इल्म है, जिस इल्म की बुनियाद पे हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ये आइडियाज फेमिनिज्म के, डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के, साइंस के, साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स हैं, मार्स पे पहुंचने की जो डिबेट्स हैं, अब इसमें ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, लेकिन वो ये इस बात को भी चैरिश करते हैं कि हमने सिर्फ दुनिया को इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम नहीं दिया, बल्कि जो आइडियाज है, जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज है, जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है, जो इंटेलेक्ट की डेवलपमेंट है, वो भी हमसे ही हो रही है। अगर आप उस सिलसिले में देखें तो वो कहते हैं हमारे पास ऑक्सफोर्ड है और कैम्ब्रिज है, MIT और स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये ऑफ कोर्स इसको एडवर्ड से बड़े खूबसूरत तरीके से, जो हम अपने आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे, जिसको वो कल्चर और इंपीरियलिज्म के साथ लिंक करता है और ओरिएंटलिज्म का जो उसका आइडिया है। तो दिस इज वर्ल्ड सिस्टम एंड इट इवॉल्व, जैसे हमने पहले बताया, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इस वर्ल्ड सिस्टम का जो एक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इसका अफ्रीका और एशिया के साथ क्या ताल्लुक रहा है। तो उसके लिए हम सेकंड फेज में जाएंगे, जिसमें मैंने बताया कि ये जो वर्ल्ड सिस्टम है, जिसके अंदर ये हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, ये बेसिकली इट वाज लेड बाय द यूरोप इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। तो वर्ल्ड सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, ये 3 सीरीज क्या है। पहला जो हिस्सा है वो 1780 से स्टार्ट होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी को क्रिएट किया, और उसी के साथ फिर एज ऑफ एनलाइटनमेंट के ने इन दोनों के साथ आइडियाज भी जनरेट किए। तो पहला जो वर्ल्ड सिस्टम का फर्स्ट जो पार्ट है, इट स्टार्टेड विद द क्रिएशन ऑफ स्टीम इंजन, विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1780s by end of 18th century, and it ended with the end of the World War, with the end of the World War II, because the World War I was the beginning of the end of this first part of the evolution, क्योंकि उसके बाद यूरोप में फाशिज्म का आना, ज्यूइश हॉलोकॉस्ट और यूरोप का कोलैप्स करना। अब जब वर्ल्ड वॉर II की तरफ हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूरोप जो है, जिसमें मेनली ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की हम बात कर रहे हैं, ये तीनों कॉलोनियल पावर्स थी, एंड दे हैड ह्यूज कॉलोनीज। वहाँ से जिनको चीप लेबर भी थी, चीप रॉ मटेरियल भी था, और फिर उसको एक्सपोर्ट करके फिनिश गुड्स में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उन्हीं मार्केट्स में बेच के प्रॉफिट कमा रहे थे, एंड दे वर ग्रोइंग। और इसीलिए यूरोप में स्प्लिट ऑफ पावर भी हुआ, एज वी डिस्कस कि जर्मनी के पास ये नहीं था और इन दोनों के पास था। एग्जैक्टली। अब अगर आप हिटलर की स्पीचेस सुने तो ये बड़ी इनकी एक स्मार्टनेस है गोरों की, दिस वाइट सुपरमेसिस्ट जो आइडियाज हैं, कि उन्होंने किस तरह हिटलर की आइडियाज़ को जो है वो फाशिज्म का जो उसका आइडिया था उसको लिंक करते हैं साइकोलॉजिकली या दूसरे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। वो ये कभी भी नहीं मानेंगे कि हिटलर के राइज में या फाशिज्म के राइज में जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्रांस और ब्रिटेन का भी उतना ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो हिटलर की, और अगर आप वर्ल्ड वॉर I के बाद हिटलर की स्पीचेस सुने तो जो एक परमानेंट वो आर्ग्यू करता है कि वी आर नॉट डेवलपिंग इकोनॉमिकली, वी आर कोलैप्सिंग इकोनॉमिकली, क्योंकि आप सबके पास, इन फ्रांस और ब्रिटेन के पास कॉलोनीज हैं और हमारे पास कॉलोनीज नहीं है। और अब ये दे विल नेवर टॉक अबाउट दैट द वेरी आइडिया ऑफ फाशिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर had its root in the British colonization, in the French colonization of Africa and the British colonization of India and mainly the Asia. तो ये उसके अंदर रूट्स हैं जो कि ये कभी नहीं बताएंगे कि हिटलर वाज आउटकम ऑफ द यूरोपियन, ब्रिटिश, फ्रेंच colonization of India and Africa. Anyway, तो वर्ल्ड वॉर II के साथ यूरोपियन लेड वर्ल्ड ऑर्डर जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो एंड होता है, एंड वी विटनेस द राइज ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड सिस्टम। और अब वर्ल्ड सिस्टम जो स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर II के बाद, इट बिगिन विद द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है वी वेंट टू बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो जो वर्ल्ड सिस्टम था अब वो 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर या बाइपोलर बन जाता है। बाइपोलर 2 दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर के आइडियाज इमर्ज होते हैं और 2 सुपर पावर्स उसको लीड करती है। एक तरफ जो है वो वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी अब बैटन या जो लीडरशिप है वो अमेरिका के पास चली गई है और कन्वर्ट होगी फ्रॉम ब्रिटेन टू, यस एग्जैक्टली, फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस टू द अमेरिका, एंड अमेरिका कॉल्ड इट लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर।
ऑर्डर, जिसको वो बड़ा चैरिश करते हैं, जो उनका प्रेसिडेंट था हैरी ट्रूमैन, जिसको ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहते हैं। अब ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या थी? उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लिबरल डेमोक्रेसीज को प्रमोट करेंगे, हम फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, और हम उन तमाम मुल्कों को मिलिट्री, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एड देंगे, असिस्टेंस देंगे जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ हैं और हमारे आइडियाज को चैरिश करते हैं। एंड दिस वाज लेटर ऑन कॉल्ड एज द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके 3 से 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, जिसका मतलब था लिबरल डेमोक्रेसी या लिबरल एंड सेकुलर डेमोक्रेसी एज ए ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम। The only system that we will recognize and acknowledge and provide legitimacy would be the global political system as a global liberal democracy, secular. दूसरा था the global economic system that we will provide legitimacy, जिसको हम legitimacy देंगे, it would be capitalism based on free market economy. और तीसरा जो उनका आइडिया था वो था ह्यूमन राइट्स का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का और फ्री मीडिया का। और फोर्थ जो उसमें था वो था ऑफ कोर्स दैट द लिबरल वर्ल्ड शुड गेट टुगेदर टू डिफेंड दीज लिबरल आइडियाज, और उसी पर्पस के लिए अमेरिका ने सिक्योरिटी अलायंसेस क्रिएट किए। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो बुनियादी तौर पे नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप का एक मिलिट्री एग्रीमेंट था सोशलिज्म के खिलाफ। और सीटो और सेंटो जो एशिया और मिडिल ईस्ट वगैरह में किए, उनका ऑब्जेक्टिव भी यही था। तो ये अमेरिकन लेड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के प्रिंसिपल्स थे। अब इसके मुकाबले में जो हमारे पास दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर आया या इमर्ज हुआ, जिसने इसको चैलेंज किया, इट वाज अ सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1970। अब द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसको हम बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं, इसके अंदर यूरोपियन या वेस्टर्न जो सुप्रीमेसी थी, इट वाज चैलेंज बाय 2 स्ट्रक्चर्स। 2 स्ट्रक्चर से चैलेंज हुई। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो हम टोटली मिस करते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारा जो डिस्कोर्स है, जो आइडियाज है, वो बहुत ज़्यादा कॉलोनाइज्ड हैं। तो उसमें जब हम वर्ल्ड सिस्टम को स्टडी करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम सिर्फ सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की बात करते हैं और सोवियत यूनियन की। तो सोशलिस्ट जो वर्ल्ड ऑर्डर था, उसके अंदर एक तरफ सोवियत यूनियन है और उसके साथ ईस्टर्न यूरोप है, जो मशरकी यूरोप है, जिसमें, और आपको पता होगा कि जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स। वेस्टर्न जर्मनी जो कैपिटलिस्ट था और यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ, ईस्टर्न जर्मनी वाज विद, हाँ। तो वो जो वार्सा पैक्ट हुआ 1956 में, जिसने एक तरफ नाटो का मकसद था अमेरिका, नीचे वेस्टर्न यूरोप, अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। और जो वार्सा पैक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव था सोशलिज्म, यूएसएसआर, नीचे ईस्टर्न यूरोप, और यूरोप 2 हिस्सों में डिवाइड हो। और ये डिवीजन जो इंटरनेशनल अफेयर्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ाई जाती, वो सिर्फ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। जो इंटरेस्टिंग डिवीजन है एज फॉर मी, एज फॉर ऑल ऑफ अस शुड बी, वो ये था कि व्हाट हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 विद द कॉलोनीज एंड द कॉलोनाइज्ड स्टेट्स। वो जो कॉलोनीज थी और जो कॉलोनाइज्ड स्टेट्स थी, उनके साथ क्या हुआ। तो वी विटनेस द development of decolonization and decolonial process in Asia and Africa, of course. और अब अगर हम डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि इंडिया आज़ाद हुआ, फिर इंडिया की पार्टीशन हुई, फिर इस तरह श्रीलंका जिसका पूरा नाम सैलोन था, ये सारे एशिया और अफ्रीका में मुल्क आज़ाद होते हैं। अब जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ते हैं, और अगर आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भी चले जाए, जो मैं पहले बात कर रहा था, जो उस तरह इसके ऊपर रिसर्चेस नहीं है, बुक्स नहीं पब्लिश हुई, फोकस नहीं किया जाता कि व्हाट वाज द आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज देयर अ वर्ल्ड सिस्टम ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। जो वर्ल्ड डीकोलोनाइज हो रही थी, जो वर्ल्ड कोलोनाइज थी अफ्रीका और एशिया के स्टेट्स और सोसाइटीज, क्या उन्होंने भी कोई अपना वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया? और वो हम देखते हैं देयर वाज अ वेरी फंक्शनल, डायनामिक, आइडियोलॉजिकली वेरी स्पिरिटेड वर्ल्ड ऑर्डर, और वो हमें मिलता है नैम की सूरत में, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको इंडिया के वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिएट किया। उसके साथ जो टीटू मीर थे और कर्नल जमाल अब्दुल नासिर वगैरह, टीटू मीर यूगोस्लाविया के जो लीडर थे, तो इन्होंने कहा कि वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दी सुपर पावर्स। पहले हम बरतानिया और फ्रांस के गुलाम रहे हैं, अब हम अमेरिका को ज्वाइन करें तो एक नया हमारा इंपीरियलिस्ट जो है गॉड बन जाएगा। और सोवियत यूनियन के साथ हमारी सिंपैथीज हैं, वी शेयर देयर आइडियोलॉजी। और सोवियत यूनियन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी था डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को ट्रिगर करने। वर्ल्ड वॉर 2 में आप देखते हैं कि जब यहाँ पे इंडिया के अंदर और जब जापानीज का रोल बढ़ रहा था बर्मा और इस क्लोज में, तो एक बहुत बड़ी वेव चली थी ब्रिटिश की तरफ से, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, इस तरह के हो गए, ताकि इनको वहाँ से रोका जाए। बिल्कुल ऐसा ही, और ये सब मेरे ख्याल सब मुल्कों में ऐसी था जो भी उस वक्त कॉलोनियाँ उनकी यहाँ पे थी उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो ये स्टेट्स डीकोलोनाइज हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि वी हैव सिंपैथीज एंड वी शेयर द एंड चेरिश द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, बट वी विल रिमेन
न्यूट्रल, और उस न्यूट्रलिटी का ऑब्जेक्टिव था कि जो तीसरी दुनिया है जिनको गुलाम रखा गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से 100-200 साल तक, उनका एक नया ऑर्डर हो, वर्ल्ड ऑर्डर हो, जो वर्ल्ड सिस्टम हो, जिनमें डेमोक्रेसी भी हो, ह्यूमन राइट्स भी हो, इंसानी आज़ादियाँ भी हों, लेकिन वो उनके कल्चर, उनकी तारीख के अंदर इनबिल्ट हों और रूटेड हों। और उसमें हमें नैम का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो अब 1945 से लेकर 1991 तक ये सेकंड फेज है, ये सेकंड सीरीज है एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें 3 वर्ल्ड ऑर्डर्स में मिलते हैं। ठीक है, अमेरिकन लेड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, सोवियत यूनियन लेड सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, और थर्ड वर्ल्ड का वर्ल्ड ऑर्डर जो कि नैम सूरत में मिलता है। अब आपको पता है, विद द एंड ऑफ द अफगान जिहाद, सोवियत यूनियन गॉट डिसइंटीग्रेटेड, एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन वी विटनेस द birth and rise of, perhaps first time since the industrial revolution, the birth and rise of the unipolar world order. America as a sole superpower of the world, America as a most dominant global economic power, political power and military power. And उसी के साथ हम देखते हैं जो मैंने पहले बात की थी कि एक वर्ल्ड सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल, प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज। तो हमें 2 बड़े जो है पॉपुलर, ऑफ कोर्स आई वोंट कॉल इंटेलेक्चुअली वेरी रिगरस और स्पिरिटेड, लेकिन बड़े 2 पॉपुलर आइडियाज मिलते हैं। एक है एंड ऑफ हिस्ट्री का, फ्रांसिस फुकुयामा, कंजर्वेटिव, सेल्फ क्लेम्ड लिबरल कंजर्वेटिव पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और दूसरा ऑफ कोर्स हार्वर्ड प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस। तो वो जो उसकी किताब है आई थिंक 1992 में पब्लिश हुई, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उसके बाद जो हंटिंगटन का आर्टिकल पब्लिश हुआ फॉरेन पॉलिसी में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर, और उसके बाद उसने पूरी बुक पब्लिश की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये वो आइडियाज थे जिन्होंने अमेरिका की जो ये सोल सुपरमेसी थी या यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का स्ट्रक्चर था, उसको एक इंटेलेक्चुअल जो है कवर देने की कोशिश की। और इसमें 2 आइडियाज हमें इंटेलेक्चुअल मिलते हैं। जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, तो फ्रांसिस फुकुयामा ये कहता है इट्स एन एंड ऑफ हिस्ट्री, and when he outlined his idea of end of history in his book, so what did he mean by the end of history? He did not mean that day of judgment is coming and the world is ending or world is going to over. He was talking in the context of that we are witnessing the end of history. That means we are witnessing the end of the intellectual development of the world. We are witnessing the end of the political economic progress of ideas. कि बुनियादी तौर पे जो end of history है, ये एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियाज और डिस्कोर्स का एंड है। कि दुनिया में अब नजरियात का खात्मा हो गया है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब व्हाट आई एम गेटिंग कि माइट बी कोई कंपटीशन नहीं है बिटवीन द स्टेट। एक्सीलेंट, यस। अब जो फुकुयामा इसको फर्दर एक्सप्लेन करता है एंड ऑफ हिस्ट्री के थीसिस को, वो ये कहता है कि बुनियादी तौर पे ये दुनिया में नजरियात की जंग का खात्मा है। इट इज द एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड। और वो ये कहता है कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री का थीसिस है ये मेरा नहीं है, आई एम नॉट द फर्स्ट वन हु इज प्रेजेंटिंग द एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस। इससे पहले हेगल और उसके बाद कार्ल मार्क्स जो फाउंडिंग फादर था सोशलिज्म कम्युनिज्म का, उन्होंने भी ये आइडियाज दिए एंड ऑफ हिस्ट्री के, बट ऑफ कोर्स दे वर डिफरेंट फ्रॉम द फुकुयामा। अब फुकुयामा ये कहता है कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री के आइडियाज हैं उसकी वो एग्जाम्पल देता है कि 20th सेंचुरी में 2 आइडियाज दुनिया को जो है वो डिक्टेट कर रहे थे या इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कैपिटलिज्म और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर अंडर अमेरिका और सोशलिज्म अंडर सोवियत यूनियन। अब इसका रिजल्ट निकला अफगान जिहाद की सूरत में, और अफगान वॉर के बाद अमेरिका ने लिबरल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ने सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को डिफीट दे दिया। एंड विद द डिफीट ऑफ सोवियत यूनियन एज ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो रोल मॉडल थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। जब सोवियत यूनियन को शिकस्त होती है तो उसकी जो पॉलिटिकल डिफीट है सोवियत यूनियन की, वो बुनियादी तौर पे सोशलिस्ट आइडियाज की डिफीट है, या सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडिया की डिफीट है। तो इसलिए वो कहता है ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। अब दुनिया में कोई नया नजरिया या नया आइडिया नहीं आएगा, कोई पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में, दुनिया को गवर्न करने के बारे में कोई नया इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं आ सकता। तो अब वो कहता है कि इट इज एंड ऑफ हिस्ट्री, दैट मींस इट इज अ विक्ट्री ऑफ द कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी एंड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। और अब अमेरिका दुनिया को डिक्टेट करेगा, और वो डिक्टेट करेगा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद पे, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एज एन इकोनॉमी और वो सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की। सो दिस वाज अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट अ डेकेड। ये एक 10 साल का पीरियड था जो कि ये चला और बड़ा चैरिश किया गया फ्रांसिस फुकुयामा को और उसको। Although there was a huge ground breaking criticism of flaw that how many flaws are in his thesis, कि उसके आइडिया में और थीसिस में कितने ज़्यादा फ्लॉज हैं। इसके साथ जो दूसरा आइडिया आया, इट वाज अबाउट द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस, and Huntington and Fukuyama are very close, were very close friends,
And Huntington argued in his foreign policy article, which later on led to his publication of a book, Clash of Civilization and Remechanism of World Order, उसने कहा कि नहीं, it's not going to be end of history. It's going to the beginning of the clash of civilizations. Okay. And he gave the idea कि दुनिया में historically 7 तहजीबें रही हैं, and he gave the list of those. और उसमें वो कहता है जो यूरोपियन civilization है उसकी beginning हुई थी ग्रीक और रोमन एम्पायर से, which led to the industrial revolution में जर्मन, फ्रांस और ब्रिटिश ने इसको किया. तो वो बताता है कि चाइनीज civilization है, इंडियन civilization है, एंग्लो सैक्सन civilization है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और उससे पहले ग्रीक वगैरह आते हैं. Then he talks about couple of other civilizations. लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद स्टडी करें तो दुनिया में जो 7 मेजर हिस्ट्री के अंदर सिविलाइजेशन रही हैं, जिसमें वेस्टर्न, यूरोपियन, अमेरिकन है, इंडियन है, चाइनीज़ है, ठीक है, इस्लामिक सिविलाइजेशन है और कुछ और सिविलाइजेशन की वो बात करता है. वो ये कहता है कि दीज सिविलाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज थ्रू द एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी, they have converted into the liberal model of the western civilization. Okay. तो वो कहता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है और जो जापानीज सिविलाइजेशन है वो भी कन्वर्ट हो गई है वेस्टर्न सिविलाइजेशन. तो वो अब कहता है कि अब दुनिया में 3 सिविलाइजेशन है. एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, इंडिया, जापान और बाकी जितनी भी तहजीबें रही हैं तारीख में, अब वो उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा है क्योंकि वो लिबरल डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करती हैं और कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट. वो कहते हैं 2 सिविलाइजेशन ऐसी हैं जो वेस्ट को चैलेंज कर रही है. एक चाइनीज सिविलाइजेशन है क्योंकि हम जानते हैं कि जो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम है इट इज स्टिल कम्युनिस्टिक, वन पार्टी रूल है, या जिसको वेस्ट पार्टी डिक्टेटरशिप कहता है. आल्दो चाइनीज कहते हैं कि कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन वो वेस्ट कहता है कि पार्टी डिक्टेटरशिप. तो एक तो जो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम है इट इज नॉट लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन लिबरल डेमोक्रेसी व्हाट वेस्ट चेरिशेस. तो इसलिए एक तो चाइना से हमें थ्रेट है, लेकिन वो कहता है कि चाइना का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि politically China is not Western. Yes. It is a communist. Yes. लेकिन इकोनॉमिकली चूंकि चाइना ने स्टेट कैपिटलिज्म या स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, जो डेंग जाओपिंग की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, हाँ 1979-80 के बाद जब माओ जेडुंग की डेथ होती है तो फिर डेंग जाओपिंग की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी वो चाइना को स्टेट कैपिटलिज्म की तरफ ले गई. अब ये जो स्टेट कैपिटलिज्म है चाइना का, वो कहता है इट्स वेरी मच सिमिलर विद डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द चाइनीज स्टेट. ये कैपिटलिज्म ही है. तो इकोनॉमिकली चाइना इज वेस्टर्न, politically it is not west. तो he says कि चाइना को हमें engage करने की जरूरत है so that we can neutralize. और वो ये कहता है कि most likely after disintegration of Soviet Union चाइना में end up being liberal democracy, क्योंकि जो liberal capitalist system है वो ज्यादा देर फंक्शन नहीं कर सकता विदाउट लिबरल डेमोक्रेसी. तो अल्टीमेटली चाइना विल टर्न इनटू द लिबरल डेमोक्रेसी व्हिच हैज बीन फेल्ड बाय द वे. ये थीसिस भी गलत साबित हो गया. चाइना इज नॉट, इनफैक्ट दे हैव बिकम मोर रिजिड व्हेन इट कम्स टू देयर पॉलिटिकल सिस्टम. लेकिन जो इंटरेस्टिंग उसका आइडिया था, ऑफ कोर्स वेरी मच ए हिस्टोरिकल, ओरिएंटलिस्टिक, नार्सिस्टिक, वो था अबाउट इस्लाम एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन. And he argued that the biggest threat and the challenge is coming to the Western civilization from the Islam and Muslim societies. कि जो इस्लाम है, जो मुस्लिम सोसाइटीज है, दे आर illiberal, they are undemocratic, they are not up for the Western. इनका political भी different है और इनका economic exactly. कि जो Western political system है liberal democracy का, most of the Muslim societies don't practice that. और जो Western industrial economic system है वो भी ये practice नहीं करती. इसके साथ साथ जो society के social cultural ideas हैं, human rights के, gender equality के, women rights के, freedom of speech के, वो भी उसका आइडिया था कि मुस्लिम सोसाइटीज प्रैक्टिस नहीं करती. और ना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, but they even don't believe in and don't practice. Of course, very narcissistic kind of situation, statement to talk about, over 1 billion Muslims divided into 60 states with such a single, lens, which is ahistorical basically. और हमें वो पता है कि एडवर्ड सिंह ने किस तरह उसको जो है वो डाइसेक्ट किया उस थीसिस को. तो उसने कहा कि अब जो फ्यूचर वॉर्स होंगी, it would be between civilizations, between Muslims, Islam and the West. And initially his thesis was very much criticized. But then when the 9/11 happened, he became literally what international scholars and analysts and his critics called him a multi-million dollars professor. That his book got published in millions of copies, and it was translated into many languages. उसके millions of copies छपी, translate किया गया multiple ज़ुबानों में, and he perhaps became the darling of the media, the most popular professor in media, and giving lectures because
by default his stupid thesis became true in the context of 9/11. Yes. तो उसके बाद America, if you look at the opening speech of the first speech of President Bush after 9/11, in which he declared the beginning of the war on terror, yes. and he talked about कि हम terrorism को खत्म करेंगे, तो वो बड़ी जिसको उसने कहा था it is the revival of the Crusades. Yes. तो President Bush की अगर आप वो स्पीच सुने 9/11 के बाद, जब उसने इराक और अफगानिस्तान पे इनिशियली और फिर इराक पे हमला करने का फैसला किया, और उसके साथ जो पूरी वो जिसको हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स कहते हैं, जो अमेरिकन न्यू कॉन्स कहलाते हैं, जो वॉर मशीनरी थी जिसको हम वॉर मॉन्गर्स भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस क्रिटिक्स जो हैं, वो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के अंदर न्यू कॉन्स बैठे हुए थे, रम्सफील्ड और डोनाल्ड रम्सफील्ड और रॉबर्ट गेट्स वगैरह, और ये सारे जो वो पूरी, और कॉलिन पावल जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो ये पूरी की पूरी जो मिलिट्री माइट थी न्यू कॉन्स की, they called it the revival of the Crusades. Okay. And it actually provided further political space to the idea of the crash of civilization. And then the war on terror began. A war on terror had its own flaws because there was no clear objectives. कि कितना हमने मिलिट्री को यूज करना है, कितना पॉलिटिकल को, although now they are talking to the Taliban, who they call terrorists. तो उस कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट एंड यूरोप had went through multiple changes. Muslims became the new socialist or new communist. Yes. जैसे कोल्ड वार में कम्युनिज्म जो है वो अमेरिका के अंदर एक नफरत की अलामत था, यूरोप के अंदर थर्ड फेज जो वर्ल्ड सिस्टम के थर्ड या वर्ल्ड ऑर्डर के थर्ड फेज के अंदर हम देखते हैं कि शुरू में is unipolar, what is unipolar, and then they have to create a opposition in terms of Muslim, yes, Islamic civilization, exactly, and then they had to fight war to end that. तो इसलिए वो कहते हैं कि post 9/11 Muslims were the communist, और जो कम्युनिज्म के साथ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कोल्ड वॉर का 9/11 के बाद वही मुसलमान, तो इसलिए कम्युनिज्म हम ये भी देते हैं कि हॉलीवुड की मूवीज और वो सारा एग्जैक्टली वो पॉपुलर कल्चर और आर्ट भी उसका हिस्सा है, मीडिया वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट, वो तो कंप्लीसिट था ही था इवन कम्युनिज्म के खिलाफ भी। और नॉम चॉम्स्की वो किताब पढ़ने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, इसमें वो एनालाइज करता है, और इसमें आई थिंक रिप्रेजेंटिंग इस्लाम एडवर्ड सईद की बहुत अच्छी किताब है, जिसमें एडवर्ड सईद ने मीडिया एनालिसिस किया है कि किस तरह इस्लाम के बारे में मीडिया में टॉक शोज होते थे 9/11 के बाद, और परसेप्शन बिल्ड की गई, और वो बाय एंड लार्ज एग्जैक्टली वो जिस तरह एक प्रोपेगेंडा किया गया कम्युनिज्म के खिलाफ कोल्ड वॉर के दौरान। तो इसका पहला रिजल्ट क्या निकला, दैट मुस्लिम बिकेम द पोस्ट 9/11 कम्युनिस्ट। ठीक है, जो कम्युनिज्म के साथ किया गया वही मुसलमान प्रोपेगेंडा, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, xenophobic, एंटी वेस्ट, और उसका रिजल्ट क्या निकला, the beginning and the spread of Islamophobia. Okay. And this Islamophobia is very much present in their popular culture. You talked about movies and dramas, yes, but also in their media as well. ये चार्ली हेब्डो का वाकया जो फ्रांस में recent development है, अमेरिका के अंदर वो जो पहले दिमाग में, और टेरी जोन्स का जो फ्लोरिडा वाला वाकया था, तो they were actually not sudden outcome. They were actually the organic outcome of American establishment with the help of the American popular media spreading propaganda, Islamophobic propaganda against Islam and the Muslims. और उसका रिजल्ट इस्लामोफोबिक स्रोत में निकला। दूसरा रिजल्ट क्या निकला, the massive consumption and spending of military on defense and military expenditures result in the 2007 and 8 economic crisis. 2007-8 का जो economic crisis है उसके स्रोत में निकला recession, and that recession began the collapse of the Western American led third phase of the world order, world system. और उसके साथ हम देखते हैं कि चाइना का राइज होता है। Now Xi Jinping जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, when he announced the BRI in 2013, Belt and Road Initiative, it was the formal announcement on the diplomatic front that the world will not be dictated anymore by the liberal Western capitalist world order. Yes. And the American Western capitalist world order has lived its life. It is now expiring. It has now become expired. इसकी expiry age आ गई है, and now it's time the Chinese to lead the world. Yes. And this is what we are talking about. कि अब जो contemporary the world in 21st century we are living is actually the conflict between Chinese and American world order. Yes. And many American scholars and analysts are arguing, let's say John Mearsheimer, one of the leading IR scholars, has argued that if we apply the Thucydidean trap on China-US conflict, China and US are going into war. Yes. And it is eventually will end up with the victory of China and defeat of the United States of America. And there are many economists who are arguing कि economic indicators भी अमेरिका के जो हैं वो चाइना के मुकाबले they are not at par, ये इतने compatible नहीं है। So I'm not saying the Chinese-led world order would be better or than the West or the American,
But whether it would be better or worse, we are sure that 21st century is going to be Chinese century. Yes. And it would replace the American-led liberal world order. Now the question is, how would be the world in the 21st century if China replaces America? Because Chinese are not liberal democrat. Yes. They do practice state capitalism. So that's a very interesting question. And I think the West will try its best to counter that China. But looking at all the states and, if you look at the history and its cycle and the way it has evolved, we can say safely the 21st century is going to end of the beginning of the Western civilization. Okay. जो Western civilization की beginning थी 21st century, जो 18th century के end में start हुई Industrial Revolution और French Revolution के साथ, अब 21st century में उसकी end का beginnings हो चुका है. It is the beginning of the end of the Western civilization. Okay. And the scholars are arguing it is going to be Eastern century, Asian century, where China will lead with the support of multiple regional players. Yes. So it would be a multiple world system under the umbrella of China. Yes. So how would it impact on the global economic, political, social discourse? Some scholars are arguing it is yet not clear. लेकिन एक बात यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है कि बहरहाल चाइना जिस तरह का भी वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड सिस्टम लीड करेगा, China has to address some of the shortcomings and the problems, rather threats, the liberal world order system has created. Okay. जो liberal world order ने चंद एक threats create किए हैं दुनिया के survival के लिए existed, उसको चाइना को बहरहाल address करना होगा. और उसमें जो सबसे important है वो है of course the global warming, the climate change, Yes. the change in the environmental pattern. So here we discuss the world system. हमने वर्ल्ड सिस्टम को टोटल ब्रेक किया है, उसके तमाम ऑर्गन, उसके पीरियड्स, उसमें तमाम आने वाली जितनी भी थेरीज थी, उस वक्त कौन कौन से मुल्क राइज रहे इस सिस्टम पे, उस सब को हम डिस्कस किया. आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी. यहाँ एक बात करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि दुनिया में ग्लोरी की हर सेंचुरी में डिफरेंट जो है वो रही हैं, वैल्यूज़ रही हैं. जैसा कि हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी में जिस मुल्क के पास ज़्यादा कॉलोनीज थी वो बहुत ज़्यादा ग्लोरी समझाता था कि इज़्ज़त का एक मुकाम है, मैं अगर ज़्यादा कॉलोनी रखूँगा तो मेरा मुकाम बहुत बढ़ जाएगा, या दुनिया उसको अच्छी निगाह से देखती थी. इसी तरह 18th सेंचुरी में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेस पे, फिर 19th सेंचुरी में मिलिट्री बेस पे, फिर 20th सेंचुरी में एटॉमिक पावर की बेस पे, सेम इसी तरह 21st सेंचुरी में दैट वुड बी इकोनॉमिक पावर. और इसी बेस पे हमने एंड किया कि चाइना का राइज इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक पावर, कि वो इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है. और इसलिए हम कहते हैं कि जो 4th फेज़ होगा वर्ल्ड सिस्टम का, दैट वुड बी लीड बाय चाइना. यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं. आई होप आप लोगों को इस डिस्कशन की समझ आई होगी. आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डिस्कशन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे, आपको रिप्लाई भी करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज़.